थैंक यू डॉक्टर अनु फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट the whole NIB team on their foundation, their 31st foundation is a great achievement. And first of all, I will, before start, as Dr. Anup also said, why quality? What is quality? We all know. Then why and how? In my pharmacology, I'm MD pharmacologist. In the first day, we learned that a patient is coming to me with a disease. Yes, and we are giving a drug. That drug has its side effects, but due to poor quality, मेरा मरीज, my patient should not get another disease. For example, if the injection is not sterile, it is having a bacteria or a fungus, we are giving him a new disease, that is the fungal disease, and it will lead to fatality. And that is a punishable crime. And therefore, it is all our moral responsibility to supply and issue the drugs with a good quality. We all can purchase, we can afford the branded drugs, right? But being a part of my government institution, we are here, designated here, to provide good quality drug to my poor patients also coming to the government hospitals. They're very poor, they can't afford the drugs, branded drugs, or even can't they purchase the most important drugs from outside. They're fully dependable on our dispensaries and my hospitals. So that's why a different department was set up by Haryana government for the procurement and the supply chain management, ensuring the quality, stocks, and other things. That is Haryana Medical Services. Please, the slides. It was established in 2014, and we have an essential list of, that is almost 400 drugs to 500 drugs, that we make every effort that should be available 24/7 in my hospitals. And we have other purchases also, that is including the other, that we purchase on demands basically. That is maybe the hospital bed sheet, it may be the program medicine, it could be anything. So the basic funda is कि my drugs, every item, even the bed sheets, even the gloves, even the syringes, including all the medicines, we all get it tested before in our NABL accredited impanel labs, and our biologicals are only tested from NAB since beginning to ensure the quality. चाहे वो टेस्ट हुआ हो, पहले नहीं हुआ हो, even sometimes we get pressure कि मैडम ये तो डोनेशन से आया है, why we are getting it tested? We need not to do the payments. तो क्यों करना? कागज ही तो पूरा, उनको लगता है, sometimes people think it is just a formality of the policy to complete the paper. A quality report is a paper, कि वो लगेगा और पेमेंट हो जाएगी. And when we are buying from the government agencies, suppose government bodies, CPSU है, other bodies also, then also we get it tested before distributing it to my patients. Before ensuring, because जैसे कहा कि क्वालिटी आपने निकाला ड्रग अपनी मैन्युफैक्चर ने, इट इज़ ऑल ऑब्वियसली गुड क्वालिटी होगा, बट व्हेन इट इज़ कमिंग टू माय हॉस्पिटल, इट इज़ कमिंग थ्रू मेनी रूट्स. टेम्परेचर है, ट्रक में आ रहा है, कैसे आ रहा है, बारिश में आ रहा है, कैसी पैकिंग है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग. सो वंस इट इज़ इन माई वेयर हाउस, it is tested, then only it is distributed to our hospitals. So for that, we have a mandate in our policy. We have a HMSCL purchase policy on which it actually works. And two skeletons are of Haryana Medical Corporation. That is our policy. And the second is our DBMU portal. That is the online portal on which we are connected through every hospital, our ministers, our stakeholders, everybody is connected through a portal. Because इतना बड़ा स्टेट है तो हम डेली मेल्स पे और इस पे तो हम बात करके नहीं चल सकते ऑफलाइन में. तो वी हैव अ ड्रग, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स हाउ आवर पोर्टल वर्क्स. एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज आवर पोर्टल, दैट इज अ ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट. इट इज़ आवर बैकबोन बेसिकली. ये हिल जाता है तो सारे हिल जाते हैं. बहुत वी गेट सडन कॉल्स, मैडम ये दवाई नहीं दिख रही हमें, ये नहीं दिख रहा है, एंड ऑल दैट. इसमें क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिमांड फ्रॉम आवर हेल्थ फैसिलिटीज़ कि हमें ये ड्रग इतने अमाउंट में चाहिए, एनीथिंग, वी हैव डिमांड इन आवर पोर्टल. अकॉर्डिंगली वी परचेज दैट अमाउंट by going many documents, tendering procedure, everything. And everything is on the portal. That is to maintain any transparency, and it is under monitoring of direct our health minister. And it is very honor that
Our Health Minister, Honorable Anil Vijji, he is always with us to ensure the quality. He never outdates की क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा. हमेशा ही इज ऑलवेज ऑन माई साइड. चाहे वो कोई भी प्रेशर रहा हो, चाहे वो हमारा कोविड पेंडेमिक रहा हो, पहले हर ड्रग टेस्ट हुई है, देन ऑलवेज. चाहे वो एम्फोटेरिसिन रहा हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो टेस्ट होने के बाद ही गया है. वो अप्रूवल देते ही नहीं है कि विदाउट टेस्टिंग तो बटेगा ही नहीं है सामान. तो इट इज़ वेरी प्राउड कि वी आर वर्किंग विद सच हायर अथॉरिटीज़. नेक्स्ट इज अर पोर्टल में एवरीथिंग इज देयर, स्टिल द पेमेंट ऑफ आर फॉर्म्स, ताकि उनको भी दिखता रहे कि कहाँ पे ड्रग लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इन क्वालिटी टेस्टिंग पाइपलाइन में है या कहीं पे भी है, स्टॉक्स में है, कहीं भी है. दैट इज़ ऑल विजिबल इन द पोर्टल. एवरी हेल्थ फैसिलिटी कैन सी आवर पोर्टल. अब वो देख सकता है कौन सी ड्रग कितनी है, क्वालिटी में है, तो कितने दिन में हमारे पास आ जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. दैट इज़ आवर पॉलिसी. पॉलिसी में हमारा मैंडेट है, वी हैव आवर अदर इम्पैनल लैबोरेटरीज ऑल्सो NABL, बट इन बायोलॉजिकल्स, सेराज, वैक्सीन्स, this is a mandate in our policy itself. It's written that it will get tested from NIB only. Our next is pass or fail. If it is passed, then it is passed in the portal only. Then it is available to all the specialists. They can see the stock. But in case it is declared as not of standard quality, then it is blocked in our portal, and that is not available for any stakeholder to see that drug. वहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, वो जाएगी ही नहीं. दैट इज़ वाई द पोर्टल इज ए मैंडेट. ऑफलाइन में गलती हो सकती है, बट पोर्टल में ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे दिखेगा ही नहीं किसी को. नेक्स्ट. और एक बहुत स्पेशल कि हमारा ये है पॉलिसी में कि वी हैव अ पॉलिसी कि द फर्म और मैन्युफैक्चरर कैन कंटेस्ट कि आपका एक एनपायरल रिपोर्ट से टेस्ट नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी आया है, प्लीज़ हमारा रीटेस्ट करवा दीजिए. बट विद NIB दे कैन नॉट चैलेंज. Refuse their challenge that it is already has been tested from a renowned NIB, so it could not be retested. That is, once it is declared not of standard quality by the NIB, it is a not of standard quality, and they have to replace that product. Next, biologicals, we have learned already a lot, so I will skip that slide. Now, importance. It is a very good platform for the quality of biologicals, as biologicals are target on the special target cells, so their quality needs to be maintained at most priority. That, and especially when it is leads NIB, when we send the samples, even sometimes we have an issues. Recently the sample was received on Sundays, so we were very worried कि पता नहीं courier वाला पहुंचा पाएगा कि नहीं. There are practical problems we face actually. Then we recently calling Dr. Gauri, really successfully, thanks to her, she takes the calls on even non-working days. She helps us a lot. The NIB team whole कि मैडम सैंपल पहुंचा कि नहीं. कहते मैडम डोंट वरी, our every staff is trained to receive the sample at the correct temperature. अगर वो करेक्ट नहीं होगा, that is returned to us. So this is a very important part in quality इंश्योरेंस कि टेम्परेचर जब पहुंचा ही नहीं वो सही टेम्परेचर पे तो होगा ही नहीं. दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, दैट इज द ट्रांसपोर्ट. सो देयर आर मेनी माइनर फैक्टर्स जो हम कभी शायद देख ही नहीं पाते. दैट विल बी रिजेक्टेड. सो एवरी स्टेप इज टेकन केयर ऑफ कि वो जो है सही टेम्परेचर पे रिसीव हो, टाइमली रिसीव हो. सो दे हैव फैसिलिटीज ऑन नॉन वर्किंग डेज ऑल्सो. थैंक्स टू द टीम, दे सपोर्ट अस सो मच. एंड next slide. Next is my acknowledgement to everybody from NIB, and especially Dr. Rashmi and the whole entire NIB team for taking care of us for our minor requirements during accommodation, transport and everything. Thank you. Jai Hind. I congratulate the Haryana State Medical Supply